थैंक यू सो मच। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि चीजें शुरू होने के पहले ही आपको लगता है कि सब खराब हो गया? अपने आप में भरोसा रखना, आपका जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको अपने ऊपर हावी कभी मत होने देना। It will happen that when you'll go to a stage, things may not work out the way you wanted it to. When you go for an interview, it may not start the best possible way that you've prepared yourself. But what is important is what you have within you. Right? I'm Captain Dharmveer Singh और मैं गोरखपुर का रहने वाला हूँ, हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ा लिखा हूँ। 12वीं तक की हालत तो ये थी कि विलयन, विलय, विलायक, सुगम्यता, सुघट्यता, भौतिक These are my subjects। और अगर हमारी दोस्ती में किसी लड़के ने किसी को अगर हाउ आर यू बोल दिया होता ना, भाई आई एम टेलिंग यू, हंस लो एक बार। सो वहां से जिंदगी की शुरुआत हुई। इग्नाइटिंग होप, उम्मीद, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टुमारो। सोने जाते हैं हम, हमेशा हमारे दिमाग में कल के लिए कुछ होता है। ऐसा भी कोई होता है क्या जो सोने जा रहा है और सोच रहा है छोड़ भाई देखेंगे कल, खुल गई नींद तो खुल गई वरना सोते ही रहेंगे? ऐसा कोई नहीं है ना। ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि कल का यार ब्रेकफास्ट मिस कर देंगे, लंच तक तो उठ ही जाएंगे, लंच तो चाहिए होता है। यहां पे जब शाहरुख खान खड़े होकर कुछ बोलेंगे कि हमारे पिताजी बहुत गरीब थे, वी डिडंट हैव मनी, दिस दैट, you'll have to buy it because he is Shahrukh Khan. But this may not inspire you, this may not motivate you, this may not touch you deep within because शायद आप उससे relate नहीं कर पाएंगे because there is only one Shahrukh Khan. I'm going to share certain instances of my life जो कि उस गोरखपुर में 5 रुपए की फीस में पढ़े हुए लड़के की जिंदगी में हुआ है, जिसके फादर एक जूनियर इंजीनियर थे, जिसने अपनी ज़िंदगी में कई बार फर्श को ठंडा करने के लिए उस पर पानी छिड़का है, जिसने अपने दोस्तों से दाल फ्राई या सादे दाल की शर्त लगाई है, जिसने अपने दोस्तों से गाजर के हलवे की शर्त लगाई है इलाहाबाद के सड़कों पे। लेडीज एंड जेंटलमैन, माय पेरेंट्स वांटेड मी टू बिकम अ डॉक्टर, क्योंकि मेरे पिताजी इंजीनियर थे। अब बड़ी मेहनत से मैंने डॉक्टरी के लिए सचदेवा न्यू पीटी कॉलेज, ये कोचिंग का नाम है, ये मैंने ज्वाइन किया इलाहाबाद में। एंड आई वाज डूइंग वेल, आई मीन लेट मी गिव माई सेल्फ ऑल्सो सम क्रेडिट। यूपी बोर्ड के हिसाब से मतलब कर रहा था मैं कुछ। एंड यू नो ऑलमोस्ट 70% ऑफ माई प्रिपरेशन एंड ऑल ऑफ अ सडन we all reach out to certain people who are doing better in the field that we are aspiring to do well in life, right? जैसे SPJIMR वाला कोई 5 साल से जो कॉर्पोरेट में काम कर रहा हो, SPJIMR का पुराना हो, तो आप उसके पास जाएंगे, उससे समझने की कोशिश करेंगे, सर आपका जब प्लेसमेंट इंटरव्यू हुआ था, हाउ डिड इट गो, व्हाट ऑल डिड यू डू एंड ऑल ऑफ दैट। सो आई रीच्ड आउट टू माय कजिन अखिलेश भैया। ही वाज डूइंग हिज PG ऑल इंडिया रैंक 2 KGMU, देन इट वाज KGMC, किंग जॉर्जेस मेडिकल कॉलेज लखनऊ। I knocked the door, 3 minutes, कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है, सिंगल सीटर रूम PG करते हुए अखिलेश भैया। I thought I am here at a wrong time. अखिलेश भैया ने दरवाजा खोला, I went inside, I'm not looking at him, I'm looking for someone else. Nobody is there, man. I'm like, Akhilesh bhaiya, what took you so long to open the door? And he showed me that thick book. He's like, बाबू वकालत और डॉक्टरी अगर विरासत में नहीं मिली है तो मत करो, पूरी जिंदगी निकल जाएगी यही करने में। Talking about 1996, the Max, the Apollo, the Medantas, the Fortises were not there. It was not corporatized. डॉक्टर चतुर्वेदी हमारी जिंदगी में हमारे परिवार के हर बीमारी का इलाज करते थे। पेट खराब, दांत में दर्द, सिर में दर्द। I don't know if my mom consulted him for her pregnancy also or not. So, things were changing. But तब तक ये चीजें चेंज नहीं हुई थी। I didn't have that kind of patience, not because I was not patient, but I definitely never wanted to spend 10 years
establishing myself. हर इंसान की ज़िंदगी में एक कोई ऐसा इंसान होता है जो directly आपके साथ involve नहीं होता है, but he eventually becomes very, very significant. My brother's friend Ashish Srivastav, I will never forgive him. He told me if you want to do UPSC, that's what I wanted to do at that point in time. He said you should go to Delhi. I was in Allahabad at उस time पे. He said दिल्ली जाने के दो ऑप्शन हैं, या तो you go to DU or you go to JNU. And there was a suffix to it. He said JNU का माहौल अच्छा है. Do I have, I mean, आपके पास कोई choice है? I slogged my everything off to make sure कि मैं अच्छे माहौल में जाऊं. All India rank 16, first. हॉस्टल लिस्ट में हॉस्टल सब मिलके बिल्कुल लड़का सेट. गोरखपुर से इलाहाबाद, इलाहाबाद से JNU, Japanese honors. This is like CS in any engineering college, you know. एकदम टॉप मोस्ट JNU का लैंग्वेज होता था वो टाइम पे. आई एम अ Japanese honors by the way, so technically I am a 12th pass. अपनी जिंदगी में 5 रुपए नहीं कमाए मैंने जापानी बोल के. ओके, एंड मैं अभी माफी मांग ले रहा हूं, मैं 12 मिनट में चुप होने वाला नहीं हूं, ठीक है. सो दिल्ली पहुंच गए आप, अच्छा माहौल भी मिल गया, कुछ तो बुरा होना था. You always fall in love. अच्छा, प्यार इतना बुरा है दोस्त. So, the problem was not that I fell in love. The problem was that the girl I fell in love with was 3.5 years elder to me. By the way, she is mother to my twins now. और जब तक मेरी ग्रेजुएशन की कहानी खत्म हुई, मैडम का निफ्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो गया. सिर्फ एक चीज ठीक थी पूरे इस समीकरण में, इस पूरे इक्वेशन में. देयर वाज ओनली वन थिंग दैट वाज इन आवर फेवर, एंड दैट वाज दैट वी बोथ वर फ्रॉम राजपूत फैमिलीज. आई नो इट इज वेरी रिडिकुलस टू से दिस, बट ग्रांट मी, मतलब 43 साल का हूं और मैं 1998-99 की बात कर रहा हूं. और शायद मैं अपने लिए एक बहाना भी ढूंढ रहा था कि इस पूरे रायते में कुछ ठीक है, और वो सिर्फ यही था. करेला ऊपर से नीम चढ़ा. मतलब समझ रहे हो. और जब मेरी बीवी ने मुझे, अब मेरी बीवी है तो बार बार बीवी ही निकलता है, या खौफ समझ लो. ओके, आई एम फाइन. नहीं समझोगे तुम लोग अभी. 20 साल का गाना सुना है ना, छेड़ो हमें हम सताए हुए हैं. ऐसे ही बोल रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड हो रहा है ना ये सब. ओके, सो यू नो शी टोल्ड मी दैट माय ब्रदर इज कमिंग टू टॉक टू यू. 97, 98 मोबाइल नहीं होता था भाई. गेट पे एक फ़ोन होता था. 4-5 दोस्तों को बता दिया, देख उसकी गाड़ी में जितने टाइम पे मैं बैठूंगा 2 घंटे में अगर मैं वापस नहीं आया तो ये मेरे पापा का लैंडलाइन, ये वार्डन का नंबर, सबको बता देना. सो ही टुक मी आउट. 2 घंटे तक बहुत अच्छे से उन्होंने बात की मेरे से, और वो सिर्फ मुझे ये समझाना चाह रहे थे कि यू विल बी कॉम्प्रोमाइजिंग विद योर करियर. यू आर अ नाइस गाय, यू आर वेल टू डू विद योर एकेडमिक्स एंड वॉट एवर यू आर एस्पायरिंग टू डू इन लाइफ, बट अपने पोटेंशियल पे नहीं पहुंचोगे अगर ये करोगे तो. ही हैड अ फेयर पॉइंट. 2 घंटे की उस जिप्सी की यात्रा के बाद जब उन्होंने मुझे मेरे हॉस्टल के सामने ड्रॉप किया, आई क्वाइटली मूव्ड आउट ऑफ द जिप्सी, इंश्योरिंग दैट नाउ आई एम सेफ. और जिप्सी के खिड़की पे हाथ रख के मैंने बोला, पर आनंद भैया शादी तो लवली से ही करनी है. He realized that okay, this guy is serious. And I asked for 1 year's time
अपने पेरेंट्स से भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था मुझे मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना. लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ये सारी चीज़ें कहना और सुनना बहुत आसान लगता है, बट कई बार आपने अपने घर वालों के साथ जो 20 साल किया है, that gives them that confidence that what you are good at, what you are not good at. What is it that you can take and what is it that you cannot take when you move outside this world. I said, give me 1 year's time. 9 months, precisely. I filled up my army form. I went for my written. 4 लोगों ने अपने अपने फॉर्म पे बीच में गोंद लगा के चिपका के यूपीएससी भवन में जाके उस लिफाफे को अंदर डाला था कि एक ही रूम में सबका सेंटर पड़ जाए. सोचो कितनी शिद्दत थी रिटर्न निकालने की. किसी का एक रूम में नहीं पड़ा. एंड I was desperate. I had to do something. I was doing my 3rd year of college and I went for an interview with GE Capital. Colonial Pacific Leasing Company was the process where I went for my interview. I got selected. 32nd milestone, Gurgaon. सुबह से लेकर रात तक ये हुआ. Japanese process था because I was a Japanese student. 14,300 रुपए उस ज़माने में तनख्वाह थी. बहुत ज़्यादा थी, believe you me. Because I wanted to go back and tell people that, I am someone. If I don't crack the army, I should have a face to go and tell people that है मेरे बस में कुछ और समय के साथ मैं कुछ और भी चीज़ें कर सकता हूँ. But to my luck, in 6 days' time when I went for my SSB, I don't know, I was cleared without any medical issues, nothing at all, and इलाहाबाद की एसएसबी देने के बाद मैं वापस दिल्ली नहीं आया. मैं सीधा बनारस गया अपने इन-लॉज के घर. आई कॉल्ड माय फादर एंड आई सेड कम देयर. And everything got settled. At an age of 22 years and 7 months, after finishing my OTA, I got married. दया की बात है ये, इस पे प्लीज एक बार ऊ करो. ठीक है. जिंदगी की एक तनख्वाह सिर्फ अपने ऊपर नहीं खर्च किया है मैंने. दर्द समझ रहे हो, ये बहुत बड़ा दर्द है. Anyways, so ladies and gentlemen, the point that I'm trying to make here is, इस पूरे प्रोसेस में हर दिन सोने के पहले बहुत सारी अनसर्टेनिटीज आई होंगी. इस 1 साल के पीरियड में जिसमें आप कुछ नहीं हो से एक आर्मी ऑफिसर बने, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी का पार्टनर चुनोगे, जिसमें आपको अपने इन-लॉज को, जिसमें आपको अपने पेरेंट्स को, जिसमें आपको अपने आप को प्रूव करना है बहुत कुछ. हर रात सोने के पहले, हर समय, हर एक चीज़ नई अटेम्प्ट करने के पहले, you will have these doubts. Will I be able to do it or not? ये होगा या नहीं होगा? What I'm trying to tell you is, it's fine. This is the process. ये डर होगा और ये डर जायज़ है, because यही डर, यही सोच आपको और बेहतर करने के लिए हिम्मत देगा, आपको प्रिपेयर करेगा. ये एक एग्जाम्पल था. अब कट टू समथिंग वेरी डिफरेंट. Can I have a few clips that I had sent? Can we play that? I'm sorry, I'm taking a little bit of time. इसका थोड़ा background दे देता हूँ मैं. This is this year, 17th of April. Just play this video if we can. Yes. I'm really sorry, just... Hello everyone, finally ready to go home. Got discharged from hospital today and now heading home. Today, after 7 months, I sat inside the car and trust me, it's a task for me right now. Not easy, but yes, made it. Excited for this recovery journey ahead, where I have to relearn pretty much everything again, from walking to sitting to everything. Can't wait
to get back in action. Thank you for all your love and blessings, and I'm extremely grateful to the best doctors I had at AIIMS and all the nursing staff to take good care of. Okay, this guy is Anurag Malu. He's a mountaineer. Can we move off this? 30 seconds video, and then we'll close this. Yeah. Sometimes I'll succeed, sometimes I'll fail, and it's okay. I'll try to embrace the failure and learn from that and move on. But the most important thing is, this is one life, and I really want to make an attempt to work towards those goals and not tell myself that I didn't do anything when I knew what I wanted to do in my life, and I just stayed laid back and just never made an attempt. So बस बहुत हो. Okay, and allow me this extra time because this is really something that I want you all to witness. No rocket science, दोनों एक ही आदमी हैं. That's Anurag Malu. The second video is पहले का, and the first video is day before yesterday. 17th of April, the mountaineering fraternity is very small, and there are very few people who are influential on social media. He went to Annapurna. It's a 8,000 plus meter peak, one of the 14 peaks that we have in the world. He could not summit. He was coming down to base camp 4, and he thought that he will try summiting Annapurna again after 3 days. On his way, when he was coming down, he met someone else, and that someone else was another mountaineer I know, that's Baljeet Kaur. She went through, this guy came, he fell into a crevasse, 70 meters. And this news came out that Anurag is missing. I knew Anurag thoda bahut. Sir, aapse milna hai. When are you coming to Mumbai? This, that. Baljeet Kaur, I am in touch with her for last 3 years. So I was monitoring Baljeet. And when she started her summit, आपके सारे बेस कैंप पे इतनी इंटरनेट फैसिलिटी होती है that people can talk and leave a message to their loved ones on their social media that, tomorrow is my summit push. Base Camp 1, Base Camp 2, Base Camp 3, Base Camp 4, any 8,000 meter kind of a summit, you will always have these barriers because the summit push is never too long because that's almost your death zone, and it pretty much starts beyond 7,500 meters. Unimaginable for all of you, but just try what happens there. Morning 18th April, I'm sitting with my team at Chayos in front of IIT Delhi, and suddenly we are talking that, Baljeet ki koi khabar nahi aayi. She started her summit push yesterday. Now, why we are having this conversation? Because we already know that Anurag Malu's case has happened yesterday. So, is everything all right with Baljeet? Another hour or so gone by, there's another very famous mountaineer who also featured in one of the ads, Mountain Dew, Arjun Bajpayee. Arjun Bajpayee and a Pakistani climber, Naila Kiani. Somehow, as I said, it's a small group. I reached out to them. They were also in Kathmandu. And I have written voice note from Naila where she accepts that there is a mountaineer from Netherlands and Baljeet. They are missing for last 6 hours. The company, you always need a company to support your summits or your entire expedition. Finally, after 7 hours, they announced that Baljeet and the other mountaineer is no more. And we started taking screenshot, but we are not saying this. We are not uttering these words that unless, mountains में ये कहा जाता है कि जब तक आपको dead body ना मिल जाए तब तक किसी को dead मत बोलना. फौज में सिखाया गया था मुझे जब मैं ग्लेशियर में था, 2004-2005 की बात है, कश्मीर की ये बात है, और वहाँ पे कभी हम ये वर्ड नहीं यूज़ करते थे जब तक बॉडी नहीं मिल जाती थी.
So I refrained from using this term that she's no more. Another 3 hours, all posts deleted, and all of a sudden this good news that Baljit is found. The other guy unfortunately could not survive. खुशहाली सारे जानने वाले लोगों के बीच में और सब लोग खुश. Baljit is coming back. This is 18th. 19th, we are all only talking about Baljit because Anurag Malu's case happened on 17th. Intermittently, I am chatting with a lot of other people, and whosoever is talking about Anurag, again we are not using the dead word, but there is nothing alive in that conversation. I get a text from Anurag's sister. उस screenshots में एक वो भी है, but मैं इतना time नहीं है हमारे पास. She said, "Sir, we want Anurag's body back." The term used. We want Anurag back. Can you please amplify this post because we are fundraising? 70 लाख रुपए की जरूरत थी. अगर आपको किसी कि डेड बॉडी को भी अगर 7,500 मीटर्स के ऊपर से अगर नीचे लाना है. So this rescue operation which involves a helicopter and 2-3 professionals, and if somebody is stuck in a crevasse, of course you need more professionals to do that super expert job and stuff. 70 lakh is what was required. And we of course started amplifying that post, story and everything. Social media reached out to IMF and everyone. 21st, when the search party went, something happened. One more video, please. This is after 72 hours. ध्यान से सुनिएगा, जो रेस्क्यू ऑपरेशन करने लोग गए हैं, वो नेपाली हैं. Yes. उनकी बात को सुनिएगा. डेड बॉडी पाइन छेके डेड बॉडी पाइन पाइना कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हुँदो रहेछ. डेड बॉडी पाइसक्यो, एकछिन कन्टेन भन्नु. Ladies and gentlemen, I have goosebumps. This is Anurag Malu. After 72 hours, in minus 50 plus temperature, this guy was still alive. Their parents returned every money that they had gathered in the name of getting his body back, because that money was collected in the name of getting his dead body. And this Anurag Malu, 2 days back, was relieved from AIIMS, and now he is in Udaipur. And we are all praying that in 6 months, 1 year, 2 years, 3 years' time, he will again stand on his feet and again start climbing. Ladies and gentlemen, I have too many stories to tell you, but the hope lies within you. इसके पहले मैम की बातों में से सिर्फ एक चीज़ मैं उठाना चाहूँगा. Slow is beautiful. And she gave certain examples. I will give you another example. Sometimes we open our laptop and the laptop is hanged and we stop pressing all kind of control, alt, escape, this, that, what not. Just leave it. It will turn on. Right? Thank you so much. And it was absolutely great for me to be here and sharing my thoughts with you. All the best.